Hi everyone, I am Dr. Apala Mishra and welcome back to this new session after a very long time since I had a very hectic schedule of training and foundation course and everything in between, and I hope you all are doing really well. And right now I think is the best time to prepare a video for the personality test since interviews are approaching and a lot of you have been asking me how to prepare for the personality test. So I think we'll go step by step and start from the beginning as to how to prepare and how to go about it. So I think for the personality test, before anything, I'd like to convey two things here. The first thing is that बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि personality test के लिए पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं. It is just a test of your personality and you cannot improve your personality in 2 days. But ऐसा नहीं है. This stage has to be given the same amount of importance as your prelims and mains, and definitely you cannot change your personality in a single day, but knowledge forms the basis of your personality. और जब आप knowledgeable रहेंगे, जब आपको अपने बारे में पता होगा, तो वो आपकी personality में automatically reflect करेगा, and that is what will make you stand out. So I think preparing for interview stage is very important. As in my case, I think इंटरव्यू वॉज वन स्टेज जिसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा तैयारी की एंड आई हैड प्रिपेयर्ड अ लॉट. आई हैड प्रिपेयर्ड थरो नोट्स फॉर द इंटरव्यू. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई से हियर इज आई वुड एडवाइज कि आप नोट्स बनाएं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड टू बी अ लिटिल ऑर्गेनाइज्ड यू नीड टू हैव नोट्स. नाउ हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सो आई से इंटरव्यू प्रिपरेशन को यू कैन डिवाइड इन 2 parts. One would be your DAF or your detailed application form and the other part would be your current affairs. So एक बार इन दोनों areas में आपने divide कर लिया, so you can have 2 notebooks or maybe divide a single notebook into 2 parts, or for me I had made notes on 1 note. So आप इनमें से कुछ भी ऐसा कर सकते हैं. And similarly for preparing you can divide your day into 2 parts. Maybe आधे दिन आप DAF prepare करें, आधे दिन आप current affairs prepare करें, so that you have a balanced approach throughout and you're well prepared in both the things. The last thing that I'd like to say here is that please let go of any arrogance if you have about clearing the mains exam. आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेंस क्लियर हो गया तो अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा एंड अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड एंड प्रिपेयर really well for the interview. So let us begin with discussing the DAF. I'll make a series of videos here and the first one would be about your detailed application form. I'm sure all of you must have already filled the detailed application form, so now we'll start with how to prepare it. So let's begin. So in front of me I have my notes and these notes were prepared in an online mode on OneNote. एंड इन दैट नोट्स आप अपने नोट्स को डिवाइड कर सकते हैं सेगमेंट्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. एंड एवरी वर्ड इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ. तो हर वर्ड के ऊपर आप क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और हर वर्ड को आप प्रिपेयर करेंगे. सो मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए थे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल माई नेम, बर्थडे, द अवार्ड्स, पोजिशन ऑफ लीडरशिप, एड्रेस, होम स्टेट, अदर स्टेट्स, बैकग्राउंड, फादर्स प्रोफेशन एंड हॉबीज. So these are your basic segments. आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं, depending on your comfort level. तो start हम करेंगे DAF का with your name. That is the meaning of your name. ये वो पहला सवाल था. Incidentally, this was the first question that was asked to me in my interview experience. So this is something that you should all very well prepare. But यहाँ पे एक caveat ये है कि you don't have to prepare it like just for the sake of the name. आपको 1-2 लेवल डीपर जाना है उससे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट अपाला, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द नेम इज ब्यूटिफुल एंड इंडिपेंडेंट, बट उसके हिस्टोरिकल कॉनोटेशंस हैं. अपाला वॉज अ ऋग्वेदिक फीमेल हु हैड अचीवमेंट्स इन द मेडिसिन साइड ऑफ ऋग्वेद. शी हैड डिस्कवर्ड द आयुर्वेदिक क्योर ऑफ ल्यूकोडर्मा. तो अब इस मीनिंग से ही हम 3 लाइन ऑफ थॉट्स पे जा सकते हैं. 3 तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं. द फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट इज दैट ओके, अपाला वॉज इनटू आयुर्वेद, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ आयुर्वेद? व्हाट इज आयुर्वेद फर्स्टली? What is Ayush? What is the Ayush ministry doing? Any scheme of the Ayush ministry do you know of?
what is the difference between Ayurveda and allopathy, and what do you think of other alternative forms of medicines. तो एक line of thought हो गई Ayurveda पे prepared. Now the second line of thought. Second line of thought would be that Apala, the Rigvedic female, was also related to medicine, and you've also done medicine. So was this a conscious choice, a decision, or a coincidence? And the second thing जो इसके साथ आएगी कि आपने मेडिसिन किया, फिर भी आपने वो मेडिकल की सीट छोड़ दी, तो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? सो इसके लिए आपका आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. You have to say कि नहीं, it is not a waste, but it is rather a resource for the country, because I'll only amplify my knowledge in the administrative field. That is what I had said. तो ये line of thought आपका prepared होना चाहिए, especially for engineers and medical background and any lawyers or any professional course. The third line of thought goes कि Apala Rigvedic female थी medical background से, so you should know about Rigved. This is just an example जो मैं अपने नाम से दे रही हूँ, and you can like change it according to your own name. So the third line was Rigved, and for that I had read those 2 chapters of ancient history, early Vedic period and later Vedic period. Position of women in early Vedic period and how it changed in later Vedic period. In one of the mocks, I was asked about Vedas and Rigved, and I was asked what is the first hymn of Rigved. So I did not know that, but later I prepared it and I got to know that. So that was prepared. तो अभी मैंने realize किया कि जब मेरे नाम का meaning पूछ रहे हैं mock interviews में या कहीं पे भी, तो वो जो सेकेंड लाइन ऑफ क्वेश्चन आ रहा है वो इन्हीं तीनों लाइन्स में से आ रहा है. एंड इंसिडेंटली इन माई मेन यूपीएससी इंटरव्यू ऑल्सो आई वॉज आस्क्ड जो सेकेंड वाला लाइन मैंने सोचा था कि मेडिसिन आपका कॉन्शियस चॉइस था बिकॉज अपाला ऑल्सो डिड मेडिसिन, और वॉज इट अ कोइंसिडेंस, एंड टेल मी द स्टोरी. सो दिस वर्कड इन माई फेवर बिकॉज आई वॉज एक्चुअली आस्क्ड व्हाट आई हैड प्रिपेयर्ड. बट डेफिनेटली ऐसा बहुत कहते हैं कि इंटरव्यू में दे आस्क एनीथिंग, दे आस्क अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स. तो ऐसा नहीं है. अगर आप 2-3 लेयर्स तक प्रिपेयर करेंगे तो आपको कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं लगेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज फॉर मी आई हैड रिटन माई बर्थडे. सो बर्थडे इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो द डेट कि उस डेट पे किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का बर्थडे, उस पर्सनैलिटी ने क्या किया है अचीव, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ उस दिन पे, एनीथिंग यू शुड नो. For example, my birth date was 20th July, and on 20th July 1969 and in some places 21st July, Neil Armstrong stepped on the moon. तो ये एक important event है हमारे history का. So this would be the first line कि Neil Armstrong landed on the moon. Now what is the second line of question that can be asked here? The second line is कि इंडिया के space missions क्या कर रहे हैं. चंद्रयान के बारे में they can ask about गगनयान, they can ask about ISRO. So you should have an idea about these things also. तो हमेशा आपको एक स्टेप आगे सेकेंड लेयर पे जाना है. Another thing that happened in July was that 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस होता है, and also incidentally a movie शेर शाह was released at that time which was also about कारगिल war. तो कारगिल वॉर मार्टियर्स के बारे में, कारगिल विजय दिवस के बारे में, about the National War Memorial, I had all this prepared, and I will attach my notes. I'll upload them on Telegram or somewhere in a PDF format so that you all can see how deep I dwelt into it and how much is required. तो एक notes कैसे बनाने और किस तरह से बनाने, और I hope you're understanding it right now. The next we move on to your school and college. तो स्कूल कॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल का जो नाम है वो क्यों है, ये नाम कैसे पड़ा. The second thing is that वो बोर्ड क्या है, CBSE है, ICSE है. For example, I was in ICSE board till 10th class and then in CBSE board for 11th and 12th. तो ICSE और CBSE का difference क्या है? Which board in your opinion is better? And what are the other boards in India? क्या क्या boards पाए जाते हैं? The next thing would be the motto of your school. कि आपके जो स्कूल का मोटो है वो क्या था, उसका मीनिंग क्या है, and how do you like use it in your own life, and how will it be helpful for you in the services. So I'd say one thumb rule for interview preparation is that for everything you should know how it will be useful for you in the services. ये administration में कैसे help करेगा. For example, if you say that sir my hobby is cricket, so you should know how will it help in the administration. आप कह सकते हैं क्रिकेट से मुझे टीम बिल्डिंग आया है, टीम स्पिरिट आया है, पेशेंस आया है, एंड ऑल दीज आर वैल्यूज दैट आई विल कंटिन्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन.
So for everything, this thing needs to be prepared. Similarly, for your college, you need to know your motto of your college, whatever your college name stands for. अगर आपके college का address लिखा है DAF में तो पता होना चाहिए वो कहाँ था, क्यों था. Any important person who passed out from your school or college, you should know of all these things. So the next thing, I think 3-4 very important things for your DAF preparation, जहाँ से question 99.9% पूछे ही जाते हैं. द फर्स्ट थिंग वुड बी योर बैकग्राउंड. जहाँ से आपने कॉलेज किया, जिस स्ट्रीम में. आई थिंक बैकग्राउंड पे उनका एक्सपेक्टेशन होता है बोर्ड का कि आपको बहुत थरो नॉलेज होगा. एंड फॉर दैट आई हैड टू प्रिपेयर डेंटिस्ट्री वेरी थरली. आई यूज्ड टू डिस्कस इट विद अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज आल्सो अ डेंटिस्ट एंड आल्सो अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू. एंड आई हैड आल्सो कॉल्ड अप माई फ्रेंड्स फ्रॉम डेंटिस्ट्री फ्रॉम कॉलेज and ask them that what all questions can be asked. जो basic doubts होते हैं which we tend to forget during the tenure of the preparation. I think वो revise करना बहुत ज़रूरी है. It should look कि आप एक बहुत अच्छे thorough knowledgeable space से आ रहे हैं UPSC में. And you know, talking about your college or talking about your stream, ऐसे questions answer करके maybe आपको bonus marks नहीं मिले, but if you're not able to answer them, then it will have a very bad impact. So आप पेनल्टी लेना अवॉइड करें इन क्वेश्चंस में. ये क्वेश्चंस हैं जो आपको बचा सकते हैं, मतलब they will not let your marks go down. So these should be prepared very well. The second most important thing I feel is your father's occupation. Father's occupation से हमेशा ही questions पूछे जाते हैं. For example, my father was in the army. So any and everything related to the army I had prepared. I was asked about permanent commission of women. I was asked about women in army in general. I was asked about women in NDA. Army का budget कितना होता है, and everything about the army. So for this, अगर कुछ current affairs चल रहा हो जो आपके DAF से related है, वो आपको वहीं अपने notes में add करते जाना है, so that you know you are aware of the things going on around the country about you. The next most important thing would be the state where you come from. So I think preparing the state takes the largest amount of time in your detailed application form. For me, I have lived in a lot of places, so there were a lot of states and I had to prepare all of them. But I'd say the most important is your home state, the state where you currently live, और वो state जहाँ से आपने अपना college pass out किया है, वो भी बहुत important है. तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितने states के बारे में prepare करें, तो I think ये दोनों states तो आपके prepared होनी ही चाहिए. So coming to the states, how do we prepare the state? So the first thing is that आप state को in general लेंगे and the next step would be आप अपने district को evaluate करेंगे. So state को in general लेने में आपको start करना है वहाँ के कुछ basics से. For example, the demography of that state. What is the sex ratio of that state? What is the population of that state? What is the percentage of GDP contribution of that state? And various things like that जो बहुत basic होते हैं. Then आप अपने state को divide कर लेंगे जैसे आप मेंस में divide करते हैं into geography, economy, polity, social, cultural and things like that. So in geography, for example, I talk about उत्तर प्रदेश. So उत्तर प्रदेश की geography में क्या क्या आपके rivers pass होते हैं, what are important landforms there, anything that is, what are the important national parks there, what are the wildlife sanctuaries there, आपका state bird क्या है, state animal क्या है, state flower क्या है, all these things you should know of. For example, in Uttarakhand I had prepared like state animal is the alpine musk deer. So you should know कि musk deer की population क्यों कम हो रही है, उनका IUCN status क्या है, all these things you should be aware of. The next most important thing would be polity of the state. So in polity of the state, for example in Uttarakhand, the first thing that comes to mind is that it is a newly formed state, 2000 में form हुआ है. तो why was it divided firstly? Secondly, how good has it been for the state or for the country? Are smaller states better or are bigger states better? ये question बहुत पूछा जा सकता है. Then अगर recently elections हुए हो आपके state में, और for example there has been some issue, for example governor का कोई issue हुआ हो, कुछ law and order का issue हुआ हो, तो all these things you should know of. और थोड़ा सा एक नोट बना लीजिएगा कि लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, कितना रिप्रेजेंटेशन है. बेसिक्स यू शुड नो ऑफ अपार्ट फ्रॉम द मेजर थिंग्स लाइक हु इज द चीफ मिनिस्टर, हु इज द गवर्नर. सो पॉलिटी के बाद अब आप आएंगे इकोनॉमी पे स्टेट की.
इकोनॉमी पे मेजर चीज़ें आप देखेंगे कि वो स्टेट अपनी इकोनॉमी कहाँ से डिराइव कर रहा है, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट स्टेट. तो फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन, लेदर इंडस्ट्री इज देयर. उत्तर प्रदेश में एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम भी आई थी. यू शुड नो अबाउट दैट एंड यू शुड नो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है. इन उत्तराखंड यू कैन से कि क्यों इकोनॉमी, टूरिज्म इकोनॉमी क्यों इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्यों कम डेवलप्ड है, कहाँ बेटर कर सकते हैं. सो इकोनॉमी यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. द थर्ड थिंग विच कम्स हियर इज़ द कल्चर और द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सारे मॉन्यूमेंट्स, एनी हिस्टोरिकल monument of importance or anything of importance culturally is very important. For example, if you're in Delhi, आपसे वो पूछ सकते हैं कि इंडिया गेट पे क्या लिखा हुआ है. ये सब आपको पता होना चाहिए. आपको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ आप रहते हो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको पता हो. तो आप एक अलग से नोट बनाएंगे आपके स्टेट के जो जो मॉन्यूमेंट्स हैं. फॉर डेली देयर वर अ लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड आई हैड टू प्रिपेयर एवरीथिंग, बट इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट इट कैन बी डन. एंड सिमिलरली सोसाइटी में आप एनी ट्रेडिशन दैट इज़ देयर इन योर स्टेट विच यू फील कि नहीं होना चाहिए. द ट्राइबल्स इन योर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में देयर वर अ लॉट ऑफ ट्राइब्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी इन योर स्टेट. सो ऑल दिस यू शुड नो. देन वी मूव ऑन टू योर डिस्ट्रिक्ट. तो डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि वाई इज़ योर डिस्ट्रिक्ट नेम्ड सो. उसका नाम पता होना चाहिए. अगर कुछ नेम चेंजिंग कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, यू शुड नो दैट and you should have an opinion कि should the name be changed or not changed. तो उसमें आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं. देन आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, कोई फ्रीडम फाइटर जो आपके डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हों, उन सब के बारे में यू शुड नो. लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू शुड नो आपके स्टेट की और आपके डिस्ट्रिक्ट की 5 मेजर प्रॉब्लम्स. इफ नॉट 5 एटलीस्ट 3, बट दीज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. कि क्या प्रॉब्लम्स हैं वो पूछें, आप बता दें प्रॉब्लम्स क्या हैं. एंड प्रॉब्लम्स के साथ साथ यू शुड नो द सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, इन वन ऑफ द मॉक्स आई हैड सेड दैट इन गाजियाबाद देयर इज दिस ह्यूज गार्बेज माउंटेन एंड सो दे आस्क्ड मी कि अच्छा तो इसका सोल्यूशन क्या है. तो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद द सोल्यूशन दैट आई कुड गिव एटलीस्ट 4-5 लाइन्स ऑफ सोल्यूशन. सो आई थिंक दैट वेंट वेल ऑन माई पार्ट कि आप ऑलरेडी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, सोल्यूशन भी प्रिपेयर्ड हैं. बहुत बार दिल्ली, यूपी, गाजियाबाद वाले लोगों से पूछा जाता है कि ट्रैफिक का क्या सोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का क्या सोल्यूशन है. तो आप 3-4 डिलीनेट करें प्रॉब्लम्स और फिर उनकी सोल्यूशंस डिलीनेट करें. और ये सारे आंसर्स आपके वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मन में सोच लिया कि आई से दिस एंड देन यू डोंट प्रिपेयर. जस्ट राइट इट डाउन कि आपको 4 पॉइंट्स मिल रहे हों, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड आप जब बोल रहे हो तो काफ़ी कोहेरेंट वे में बोल रहे हो कि लगे कि मेंटल क्लैरिटी ऑफ थॉट है. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एस्पेक्ट विच इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द हॉबीज़. तो आई डिड नॉट नो हाउ टू फिल माई डैफ. आई हैड नो गाइडेंस एट ऑल. सो मैंने अपने डैफ में सब कुछ लिख दिया था. तो बट आई से कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज एवरी थिंग यू राइट इज़ अ क्वेश्चन इन इट सेल्फ. इट इज़ अ यूनिट ऑफ अ बुक, वट एवर यू राइट. सो आई हैड रिटन 3-4 hobbies. But however, how to prepare, since you've already submitted your DAF, how to prepare for your hobbies is something that is very important. For example, my first hobby was poetry writing. So in poetry writing, again, I think you can form 10 questions and answer them. So the first question would be very basic, why do you write? But ये why do you write का आंसर देना बहुत difficult होता है. या why do you pursue this hobby? Why is cricket your hobby? So you can say कि मतलब poetry writing से I said that it is a form of expression and it brings a lot of mental clarity and it is a form of communication, sensitivity develop करता है. Anything, just prepare something. Why is your hobby के बाद you should know what values has this hobby imparted to you. For example, in poetry I can see it has imparted sensitivity, empathy, creativity, things like that. And after the values, how will these values be helpful in administration, or how will the hobby be helpful in administration? For example, poetry ka we can see ki poetry is a very common or very mass appealing form of communication. तो जैसे स्वच्छ भारत के लिए भी पोइट्री गाई जाती है. इवन ड्यूरिंग कोविड वी हैड पोएम फॉर अवेयरनेस. तो पोइट्री कैन बी यूज्ड इन दिस वे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस इज हाउ आई विल यूज इट. थिंग्स लाइक दैट यू कैन प्रिपेयर.
After that, you should know some great poets of like international poets and poets from India also. तो आपको अपने फेवरेट पोइट्स पता होने चाहिए, अगर क्रिकेट है तो फेवरेट क्रिकेटर पता होना चाहिए, क्यों है पता होना चाहिए, एंड जो भी आप प्रिपेयर करें इंडिया एंड अब्रॉड दोनों का पता होना चाहिए. नाउ इफ यू आर अ वुमन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट फीमेल पोइट्स और फीमेल क्रिकेटर्स और फीमेल बास्केटबॉल प्लेयर्स, एनीथिंग यू शुड नो कि फीमेल्स कौन है जो उस एस्पेक्ट में अच्छा कर रही हैं. You should even know about female IAS officers who are doing really well. I had prepared a note on major female IFS officers of the country and it was on my tips. So like one page you should keep on women specifically. So after this in hobbies you should also learn some things. For example आपके favorite poet की poem and अगर poetry hobby है तो एंड अ पोएम दैट यू वुड लाइक टू रिसाइट फॉर द बोर्ड. तो आपकी एक पोएम प्रिपेयर्ड होनी चाहिए जो आपको याद हो बोर्ड को सुनाने के लिए. एट द एंड ऑफ माई ओन इंटरव्यू आई वॉज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम एंड सिंस आई वॉज प्रिपेयर्ड आई कुड रिसाइट अ पोएम एंड दैट वर्कड इन माई फेवर. बट वॉट इफ यू नॉट प्रिपेयर्ड, यू विल जस्ट लूज एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर मार्क्स. तो इसलिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए इन सब एस्पेक्ट्स में. And I think this is mainly your DAF. This covers the broad details of your DAF, detailed application form. One thing that you should be very cautious about is that आपको current affairs अपने detailed application form से link करने होंगे. For example, in my time, there were two things which were very important. One was COVID and the other was Olympics. Now Olympics चल रहा है और आपने अपनी हॉबी लिखी है बास्केटबॉल, तो आपको पता होना चाहिए ओलंपिक्स में कौन बास्केटबॉल खेल रहा है, कौन जीत रहा है, इंडिया का कौन रिप्रेजेंटेटिव है, खेल भी रहा है या नहीं खेल रहा. थिंग्स लाइक दैट आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली फॉर कोविड. सो आई थिंक दिस ऑल इन ऑल विल गेट योर डैफ प्रिपेयर्ड. आपको कुछ दिन रखने पड़ेंगे नोट्स बनाने के लिए एंड देन यू विल हैव टू कीप रिवाइजिंग देम सो दैट यूर थरो एंड ऑल्सो कीप ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ये एस्पेक्ट भी और पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है. ट्राई टू लिंक थिंग्स about your own life with the current ongoing activities in the world. So I think this was the basic brief thing. अगर कोई और ऐसा aspect है जो आप चाहते हैं कि मैं elaborate करूं तो आप नीचे comments में लिखिए and I'll make a video on it. And see you in the next video. All the very best.